Hello, dear students. So, I think you all have done practicals up to practical 1 to 8. Now, we are starting practical of question number 9. Okay. So, this is our question number 9. What it is saying, this it has this following data. This worksheet has following data. First question is find the absolute value of data present in cell D1. तो पहले हमें यहाँ पे पहला जो प्रैक्टिकल है उसमें पूछा गया है कि जो D1 सेल है जो D1 सेल है ये वाला ये डेटा ये 14.5 इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेटा प्रेजेंट इन सेल B2। तो B2 सेल के अंदर B और 2 यानी कि ये 58 इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द राउंडेड वैल्यू ऑफ डेटा प्रेजेंट इन D2 विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो जो D2 सेल है यानी कि D2 यानी कि 12.5 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमें राउंडेड फॉर्म में डिस्प्ले कराना है और जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, इसको हमें करना है। ठीक है, कैसे करते हैं तो हम वन बाय वन सारे काम करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिकल है, दैट इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेटा प्रेजेंट इन सेल D1। ठीक है, तो D1 सेल पहले हमें इस तरीके का एक डेटा बनाना पड़ेगा स्प्रेडशीट के अंदर और उसके बाद में हम यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे। सो फॉर दिस वी आर ओपनिंग स्प्रेडशीट हियर, ओके, और वी कैन use OpenOffice Calc, okay, for this purpose. So first we have to make this data. So we are going to spreadsheet option here. डेटा क्या है इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दिस इज कॉलम हेडिंग एंड दिस इज रो हेडिंग। इन कॉलम इन सेल A1 we have to write 11.2, then 22.5, then 32, then 14.5, then 20. Okay, next row has data, suppose 21, 58, then 46, then 12.5, then 31. Then we have also some data in third row, 26, 54, then 74, then 2, then 56. Okay, so this is the data that is given us in question number 9. Okay, so first is find the absolute value of data present in cell D1. So which is cell D1? This is the cell D1 because it is D column and first row. So here you can see the address also. This cell address is D1. Okay, so this value we have to display the absolute value of this D1. Okay, so how can we find absolute value? Okay, so in this cell we are calculating the absolute value here. So for calculating the absolute value we have to write the ABS function. Okay, absolute function. So we will type here ABS, then bracket, and this is the cell address D1. Okay, so this is the absolute value. Absolute value is nothing. If this value was in negative number, then it will automatically convert into positive, and if it is positive number, then there will be no change. Okay, so this is the absolute value. So for calculating the absolute value we have to write this function. Okay, so we take this print here, we can take this print here, okay, and paste here in our answer. Okay, that is done.
So this is our first task done. Now we are moving to the second task. Okay, so this is our second task. Now what the second task is saying, second task is saying that we have to find the square root of data. Find the square root of the data present in cell B2. ओके, तो B2 सेल में जो डेटा है उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. दिस इज आवर टास्क नंबर बी. ओके, हियर वी कैन not properly coming. Okay, now so what we have to do, we have to find out the square root of data present in cell B2. तो सेल B2 में चलते हैं, हम देखते हैं क्या है. ठीक है, तो सेल B2 में हम इसको कैलकुलेट करते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेटा प्रेजेंट इन सेल B2. सो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका एक फंक्शन है. हम यहाँ पे लिखेंगे SQRT. ओके, SQRT द फंक्शन that is used to calculate the square root of given data. So given data is cell B2. Okay, so this is cell B2 and we have to calculate the square root of this 58. Okay, so when we press enter, our square root will calculate it. Okay, so this function you have to write here. So we will take printout of this value. Okay, and paste here. So this is the answer of our question number B. Now we are moving to the question number C. Okay, we are moving to the question number C. What question number C is saying? Find the rounded value of data present in cell B2 without any decimal digit. Okay, so this is our find the rounded value of data present in cell D2 without any decimal digit. Okay, this is our question number 3. So we are going again on this cell. This is our second question, and the third question is rounded value. Okay, rounded value. Okay, for this rounded value we can use round function also, round. Okay, and we can take this D2 this as round, and here we can give the number of decimal points. Here it is required no decimal point, so we can put it here 0. Okay, so now it is rounded Okay, so here we are using this comma, but comma is not required here. We have to use this colon. Okay, 0. Okay, now it is working. So this is 12.5 become 13. Okay, so it is the rounded value of 12.5 means D2 cell. Okay, this is the cell number D2, and here we can print the rounded value of this. Okay, so we have to take printout of this and we have to paste here. Okay, so this is our practical number 3rd. Okay, so this is our practical done. Now we will move to the practical number 10. Okay, so for watching this practical number 10, please subscribe the channel and join the class. Okay, thank you everyone.